This conference will now be recorded. Any other question about the load balancer? Not yet. Just I did the practical और practical हो गया था अच्छी तरह. Okay, done. So can we proceed for next step, application Yeah. gateway? Yeah. In case of load balancers, we already discussed about total 4 different types of load balancers are available. और हर एक load balancer की अपनी quality है, हर एक load balancer अपने requirement के according हम setup करते हैं. Mhm. जिसमें से एप्लीकेशन गेटवे हमारा नेक्स्ट लोड बैलेंसर है. वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन गेटवे बिकॉज मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन prefer to use the application gateway because it gives us some more facilities and services in compare of normal load balancer. The application gateway can help us to set up our website with security, SSL और भी बहुत सारे options और भी बहुत सारे features इसमें available रहते हैं. But we should know about the prerequisites. If you want to set up your application gateway, तो सबसे important part ये है कि you should know about कि prerequisite क्या होगी. लोड बैलेंसर की prerequisite में हमने बात की थी कि अगर आप लोड बैलेंसर establish करना चाहते हैं, so in case of load balancer, you must need to create our entire virtual machine in same cluster or same availability set. Is that clear? Yeah. हमने 2 इंस्टेंसेस बनाए थे और दोनों ही इंस्टेंसेस हमारे सेम अवेलेबिलिटी सेट में रखे थे. Then we are able to access our virtual machine in our load balancers load balancers front end, sorry, load balancers host pool. जो भी हमारे पास pool था उसमें हमने virtual machine को establish कर रखा था. As it is in case of application gateway, हमें क्या करना है? We must need to create VNet. It's mandatory. आपको एक VNet तैयार करना पड़ेगा and VNet should be contain minimum two subnets. Subnet 1 for VM, subnet 2 for app gateway, means application gateway. Okay. This is the first prerequisite. Then second prerequisite, create virtual machine, web app, or any kind of CMS based website. आप इसमें से कुछ भी तैयार करिए, लाइक एज विद द हेल्प ऑफ कंटेनर या कुछ भी आप वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, तो यू मस्ट नीड टू प्रोसीड कि एटलीस्ट डमी वेबसाइट को क्रिएट करने का आपके पास लोकेशन होना चाहिए. थर्ड नंबर, क्रिएट और कॉन्फ़िगर डमी वेबसाइट. दैट्स इट. चौथा नंबर, क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे and add VMs. This is the agenda that we need to perform. One question. Yes. That's you told me that we need a VNet and 2 different subnet. That's clear. For VM, we need a subnet. For application gateway, why we need the separate subnet? Due to reason of security, we must need to provide a separate subnet for our gateway because we don't want to disturb the address which is available, which is created for the virtual machines. Okay, पर जो application gateway है वो VNet पे नहीं होना चाहिए rather than inside the VNet. No. These subnets are under the VNet. That's right. That's under means before the VNet because it's an application gateway. No. So see, that should be before the VNet, and I mean. No, before in case of application gateway, the first agenda, the first step that we need to follow to create a VNet. उसके बाद सबनेट आएगा, उसके बाद अपना एप्लीकेशन गेटवे आएगा. Is it okay? Yeah.
Okay, so can we move and check the practical? Yeah, sure. I'm going to create VNet first. According to the prerequisite, let me open networking, select VNet. एक ही VNet में दो different subnets को हमें tag करने हैं, दो different subnet को attach करने हैं. Select your container. This is resource group, app VNet. This is our VNet name. Japan is our location. Select the IP address that you want to configure 192.168.1.0/25. This is the address space 25 जो है ना address space है. I'm going to add one subnet VM 192.168.1.0/26. 26. Yeah. 64 ये इसके लिए हो जाएगा. टोटल 128 आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे मिलेगी. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक एट the remaining subnet that you need to create. No need to create right now. Whenever we proceed and create our application gateway, उस टाइम पे हम इसको क्रिएट करेंगे. अभी हम केवल एक सबनेट तैयार कर रहे हैं, बट स्पेस हमने 64 रख दिया है कि इन फ्यूचर जब हम अदर गेटवे क्रिएट करेंगे, अदर सबनेट तैयार करेंगे, तो रिमेनिंग स्पेस को यूटिलाइज कर देंगे. नेक्स्ट, no need to do anything because next chapter is next topic is bastion. तो अगले में हम bastion के बारे में बात करेंगे. अभी हम प्रोसीड कर देते हैं इसको क्रिएट करने के लिए. Our VNet is ready to use, so do one thing. Let me create a one virtual machine and after that proceed for uh, another step. Click virtual machine. In this case, no need to configure any kind of availability set. So I'm going to proceed with without availability set, server 2016. Let me select two core processors, 4 gig of RAM, username and password. 3389 plus port number 80, port number 443. Next, next. App VNet, यहाँ पे अपने पास subnet VM, the subnet that we created. No need to make any changes. Same protocol हम इस्तेमाल करना चाहते हैं. Proceed to create virtual machine. After creation of virtual machine, we will proceed for next step, like as the uh, install IAS service and create one dummy web. Okay. One more question. Yeah, please. Do you have some scripts, कोई PowerShell scripts or directly, I mean, that created an IS server and make an web page on that one? We have option to execute the script to install, but for web page creation, we must need to follow the manual step.
ओके, तो ऐसा कोई इन PowerShell स्क्रिप्ट नहीं आती कि मतलब you just configure the script and that will create an IS server and make an web page. we have an option to just execute a simple command. एक हम्म, कमांड के थ्रू हम अपने इंस्टेंस में या कोई भी सर्वर के ऊपर वेबसाइट सॉरी आईएएस को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वेबसाइट के लिए हमें मैनुअल टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं उसका एक प्रैक्टिकल कर रहा था, दैट्स आई मीन इन Terraform दे हैव ना, आई मीन, तो उसमें क्या किया, एक कंटेनर बनाया, कंटेनर आई मीन एक स्टोरेज बनाया, कंटेनर बनाया एंड एक ब्लॉब and they put the script in that one हम्म। and they execute the script and that they created an IS server as well as in a web page. लेकिन मेरे को that's a different thing, वो भी PowerShell है, but that's not executed in when I'll go for the portal. प्लेटफॉर्म में तो रन कर गई पर वहां पर रन नहीं करी, so I some check on the GitHub, तो मेरे को कोई स्क्रिप्ट मिला नहीं अभी तक। नो सी, एक्चुअली इन केस ऑफ आवर ऑटोमेशन पार्ट, टेराफॉर्म हो गया या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर की अगर हम बात कर लेना, दे आल गिव अस ऑप्शन टू सेट अप सर्विसेज विदाउट ओपनिंग आवर पोर्टल। हम्म, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर अभी जो है ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहा है। मींस इन हम्म, केस ऑफ एज्योर आल्सो नो नीड टू लॉग इन आवर एज्योर पोर्टल टू yeah, परफॉर्म एनी टास्क, चाहे वो वीएम क्रिएट करने की बात करें या फिर नॉर्मल वीनेट तैयार करना है या और कोई भी सर्विस स्टैब्लिश करनी है। यू इफ यू हैव योर ऑन टेम्पलेट, अगर आपने पहले से टेम्पलेट बना के रखा है तो उसी टेम्पलेट में आपको एडिटिंग करते जाना है बस। नहीं वो भी जो भी कस्टमाइज है या दैट्स प्रोविजनर है, वो डायरेक्ट जनरेट करके नहीं देते, यू हैव टू कॉन्फ़िगर इन पोर्टल, मतलब वो सिर्फ एनवायरनमेंट बना के दे देंगे, दे जनरेट अ फाइल, करेक्ट। बट यू नीड टू डू दैट थिंग, तो मैं कोई मिला नहीं, तो आई थॉट आई लास्ट टू यू एंड नो नो, वी हैव ऑप्शन तो अ, अपने इसमें एक दो सेशन हम रखेंगे टू मैनेज द सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, like ऑलराइट। by using the cloud shell, by using the CLI, तो by using the template ARM template के जरिए, तो इसमें थोड़ा सा गैप समझने की कोशिश करेंगे कि how we can manage the resources or services without portal or with automation services, तो वो हम लोग एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म करते हैं टू इंस्टॉल द IIS रोल टू क्रिएट आवर डमी वेबसाइट। यहाँ पे हम सिंपल सा इंस्टॉलेशन कर लेते हैं एक अपने इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। Just need to create one dummy website because IIS service is installed successfully. I'm just going to make few changes in our existing file. तो जब भी हम IIS सर्विस इंस्टॉल करते हैं, यू नो दैट ये जो फाइल्स है, इसके अंदर जो फाइल्स दिखती है IIS समथिंग करके, ये ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाती है। वी जस्ट नीड टू ओपन एंड मेक द चेंजेस ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके वी आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर ऑन सर्वर।
Done. So this is test web server for app gateway. I'm Great. just going to save it. No need to make any changes. Back to the portal. If you just copy the public IP address of this machine और अगर हम ब्राउजर पे पेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें इसका एक्सेस मिलेगा. But we don't want to access our website with the help of public IP address, right? Because we need to create more than one virtual machine. तो अभी तो हमें यहाँ पे एक से ज्यादा virtual machine create करने की requirement होगी to understand about the load balancer. But in LB we have already discussed about कि कैसे दो different virtual machine को attach करके हम load balance configure करते हैं. कभी first server से में access मिलेगा, कभी second server से मिलेगा according to the load, right? So here we can also put more than one virtual machine, but अभी हम थोड़ा सा time save करने के लिए एक ही VM रख रहे हैं. Our agenda to access our website through the application gateway. Is it correct? Yeah. Open web server and now proceed for load balancers. तो अभी हम यहाँ पे move करते हैं load balancers पे. Under the load balancer, select application gateway. There are no application gateway available, so I'm just going to proceed create application gateway. Same procedure, select your container, select your application gateway, class, app, gateway. Select your location. So we establish our all the services in Japan East and tier. Tier, as per the name suggests, the meaning of tier is correlated to the, you can say that is correlated to the capacity or capacity of our web servers. तो दो पार्ट में कैटेगराइज है ये, एक स्टैंडर्ड एंड अनदर इज WAF. यू हैव ऑप्शन टू चेंज योर प्लान एनी टाइम, किसी भी टाइम आप अपने इस प्लान को चेंज कर सकते हैं. Okay, that's related to the hardware. Backend hardware, yes. Yeah. Okay. It's related to the backend hardware that is established by the provider. Azure ने जो सेटअप एस्टैब्लिश किया है बैकएंड में, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं. So you can proceed with the standard version 2, WAF and WAF version 2. So I'm going to proceed with WAF because I'm planning to set up a WAF service with our application gateway to protect the environment. Number of instance count, how many instance you want to put, 5, 10, 20, 100. According to the requirement, you can just put here the number of instances. So I'm going to proceed with 2. This is SKU, stock keeping unit. Two different parts are available. SKU, medium can help us to put our virtual machine up to 100 and large के केस में आप 1000 इंस्टेंस को बैकएंड में सेटअप कर सकते हैं. तो 1000 इंस्टेंस या 100 इंस्टेंस भी काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है. So you can proceed with any as per the requirement. So I'm going to proceed with medium. यहाँ पे हम medium के through. Okay, thus we have two options, medium and large. Medium and large, yes. Okay. And that's WAF status and the mode. Sorry, which one? Okay, WAF. okay. What you want to do? Do you want to activate your WAF and you want to utilize the WAF services right now, or do you want to configure it later? Okay. ठीक है ना. WAF सर्विस आप इमीडिएटली अपने इस वेब सर्वर के साथ यूज करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा मींस यू विल कॉन्फ़िगर इट लेटर एज पर द रिक्वायरमेंट. जब रिक्वायरमेंट होगी तब उस केस में आप इसको यूज करें. Okay, fine. Clear? Yeah. Okay, so I'm just going to activate it, enable it, and WAF is a web application firewall. Web application firewall means the meaning of firewall, as we know that, can help us to protect the environment. So we have a two different way to utilize our WAF. One is detection and another is prevention. Okay. Meaning of detection, you are performing a task as a R&D, research and development. Okay.
आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आप एक सिक्योरिटी टीम है, एंड एज ए सिक्योरिटी टीम आपने डिसाइड किया है कि जस्ट वांटेड टू चेक कितने तरीके से इश्यूज आ सकते हैं किसी एक वेब सर्वर के ऊपर। ओके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी में दो टीम हायर करती है, रेड टीम एंड ग्रीन टीम। इज दैट करेक्ट? Yeah. सो रेड टीम का काम क्या रहता है, वो जो प्रोफेशनल हायर होंगे, जो इंजीनियर्स हायर होंगे, प्रोफेशनल्स हायर होंगे, सिक्योरिटी इंजीनियर, उनका सिर्फ यही काम रहेगा कि वो किसी भी तरीके से उनके खुद के इन्वायरमेंट के ऊपर अटैक करें। एंड दे आर ऑथराइज, ऐसा नहीं है, दे आर ऑथराइज कि वो खुद के सेटअप के ऊपर अटैक करें किसी भी एंगल से, जो उनको नॉलेज है, जो उनके पास टूल्स है, जो उनके पास स्क्रिप्ट है, उन सभी का इस्तेमाल करके वो अटैक करें। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Mm-hmm. ग्रीन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि they are responsible to protect the environment. Clear? Okay. Yeah. So we selected on detection. नहीं, if you are a R&D, research and development, then Okay. detect. और आपको Mm. लगता है कि हमें कोई हेडेक नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू, हम इतना वेट नहीं करेंगे कि हमारे वेबसाइट पे अटैक हो, फिर उसके बाद हम उसको रीड करें, देन उसको प्रिवेंट करें, इतना टाइम नहीं है, तो आप डायरेक्टली प्रिवेंशन पे जा सकते Oh, fantastic. Yeah. हैं। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. क्योंकि बहुत सारी कंपनी होती है ना, ठीक है अटैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे वेब सर्वर पे अटैक हो गया, बट आई वांटेड टू नो अबाउट कि ये अटैक कौन सा था, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, कौन सी आईपी से अटैक आया। दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ डेटा। Mm. उनको प्रॉपर डेटा चाहिए, प्रॉपर उनको डॉक्यूमेंट चाहिए टू स्टैब्लिश मीन्स टू प्रिपेयर अ सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। तो उस केस में आप डिटेक्शन लगा दोगे, बट इसमें जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट रहेगा वो आपको मैनुअल परफॉर्म करने पड़ेगा। Okay. एंड प्रिवेंशन के केस में कभी अटैक हुआ और अटैक को बाय डिफॉल्ट डब्ल्यू ने इंटरनली हैंडल कर लिया, तो उस केस में हमें मालूम नहीं चलेगा कि क्या इम्पैक्ट आया। हाँ, मॉनिटर होगा, अलर्ट होगा कि आपके सिस्टम पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है, अनऑथराइज एक्टिविटी हुई है, अनएथिकल एक्टिविटी हुई है। तो बट उसका जो सोल्यूशन हुआ, उस सोल्यूशन के लिए मीन्स आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देगा डब्ल्यू, क्योंकि ये बिल्ट इन सर्विस है, ये अपने आप से हैंडल कर देगा। Mhm. तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद प्रिवेंशन। यहाँ पे नेटवर्क वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अवर ऑन नेटवर्क, तो जो अपना नेटवर्क है हम उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐप वीनेट। सबनेट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, दिस इज अवर सबनेट दैट वी क्रिएटेड, बट एप्लीकेशन गेटवे के लिए आपको एक अलग से सबनेट असाइन करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, मैनेज सबनेट कॉन्फ़िगरेशन, वी हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश आवर वीनेट विद एक्स्ट्रा सबनेट, है ना, तो यहाँ पे एक सबनेट हम बना देते हैं। एप्लीकेशन गेटवे, एंड बाय डिफॉल्ट दिस इज द एड्रेस स्पेस, अपने आप इसने पिक कर लिया है। तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 28, 27, 26 जो भी आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंशन करिए एंड क्लिक। Why taken 28? मतलब बिकॉज आई डोंट वांट टू यूटिलाइज मच आईपी एड्रेस, okay. क्योंकि हमें एक ही गेटवे बनाना है। आई डोंट वांट टू क्रिएट मल्टीपल थिंग्स लाइक एज की गेटवे भी बनाना है, बीपीएन भी बनाना है, तो दैट्स व्हाई आई एम Oh, जस्ट 28, 10-12 आईपी right. एड्रेस रहेगी, Yeah. एंड आईपी एड्रेस इनफ। That's saving IP addresses. Yeah, the application gateway ready, 28 IP address, 28 और 11 IP address। आप अपने गेटवे को यहाँ पे करिए अब सेलेक्ट, दैट्स इट, क्लिक फ्रंट एंड। बाकी की जितने भी स्टेप्स है ना, वो आपको एज इट इज लोड बैलेंसर की तरह लगेंगे, पब्लिक Okay. प्राइवेट बोथ। So as well the name suggests, sometime organization want to set up our website within the organization, वो चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है ना within the organization रन करे, then private। If you want to host your website worldwide, definitely इसमें हमें public proceed करना पड़ेगा।
Both. The meaning of both. Sometime you want to access your website within the organization. Sometime you want to distribute the website to worldwide. तो उस केस में हम both कर देंगे. I'm going to proceed with public. Add a new IP address. Gateway public IP. ठीक है. This is the public IP address that we need to purchase. Next, backend pool. So as per the name suggests, the backend pool can These are help our us to systems. add the virtual machine. तो Yeah. टेस्ट पूल के नाम से हमने दे दिया एंड दिस इज द टारगेट टाइप्स. मल्टीपल टारगेट. आईपी एड्रेस पे जा सकते हैं, वीएम पे जा सकते हैं, वीएमएसएस पे जा सकते हैं, ऐप सर्विसेज पे जा सकते हैं. इनमें से कोई सा भी आपने मेथड इस्तेमाल किया है टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. Okay, why the first one is the IP address. That's machine address. मशीन आईपी एड्रेस. यस. Or second is the virtual machine. Okay, directly हमने कर दिया. VMSS and app service. App service भी हो जाएगा. VMSS, I mean, that's a skill set. How we can take skill set? Sorry, can you please repeat again? Okay. Three is clear. App application is an address. Virtual machine is an address. IP is an address. Skill set is, I mean, that's in a more than one system. वीएमएसएस के केस में आप बात करें. सॉरी. Yeah, VMSS. Yeah. या वर्चुअल मशीन स्कैन सेट के केस में अगर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस तैयार कर, मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं अपने पास, राइट. Mm-hmm. तो मल्टीपल इंस्टेंसेस को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, मल्टीपल Mm-hmm. इंस्टेंसेस को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो दैट टाइम वी नीड टू सेलेक्ट द बीएमएसएस. Okay. All right. सो इन आवर केस हमने जो वर्चुअल मशीन इस्टेब्लिश कर रखी है विच इज सिंपल वीएम. तो हम वीएम का सिलेक्शन कर लेते हैं. जस्ट नीड टू सेलेक्ट आवर वर्चुअल मशीन निक कार्ड. दिस इज आवर वीएम निक कार्ड 192.168.1.4. दिस इज वर्चुअल मशीन आईपी एड्रेस. ऐड करेंगे. नेक्स्ट. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. और इस कॉन्फ़िगरेशन में वी आर गेटिंग 1 2 3 तीन डिफरेंट ऑप्शन, जिसमें से दो ऑप्शन ऑलरेडी हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं. वी कॉन्फ़िगर द पब्लिक गेटवे. दिस इज Mm-hmm. पब्लिक आईपी एड्रेस फ्रंट एंड आईपी में. बैकएंड पूल के अंदर टेस्ट पूल तैयार किया है एंड टेस्ट पूल के केस में हमने एक वर्चुअल मशीन को ऐड कर रखा है. इज दैट क्लियर? Yes. नाउ वी जस्ट नीड टू ऐड अ रूटिंग रूल्स. अब हमें क्या इस्टेब्लिश करना है? यहाँ पे रूटिंग रूल को इस्टेब्लिश करना है. That means we configure the port 80. एग्जैक्टली. इनबाउंड रूल. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे. वी जस्ट नीड टू ऐड अ रूल. कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक टेस्टिंग रूल के नाम से. Mm-hmm. दिस इज द लिसनर्स. टाइप द नेम ऑफ लिसनर्स. फ्रंट एंड आईपी में पब्लिक. पोर्ट नंबर में 80 और 443. द 443 रिक्वायर्ड एसएसएल सर्टिफिकेट. तो ऐसे अभी अपने पास कोई एसएसएल सर्टिफिकेट है नहीं. वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद एचटीटीपी. क्लिक ऐड. Under the ad, we just need to provide the information about backend targets. Listeners हो गया. अब backend targets में जो भी आपने pool बनाया है, pool की information. And another important part is related to the backend setting. So backend setting में भी हमें authorize करना पड़ेगा कि I wanted to authorize for port number 80. Click add.
One, two, three. Both options completed successfully. Just need to click next, review, and create. The application gateway will take up to 8 to 10 minutes to create it. Okay.
Manjit, one option always coming. Mhm. When you make a machine or do anything, there is one option comes in the top to improve security, enable just-in-time access. So just-in-time access is what I mean, without any username password or not asking the credential. I think it's related to the security which is managed by the backend. Okay, because it's given an option when you create a VM. I mean, while connecting the VM. No, user ID and password is mandatory. Only in case of applications, no need to provide the credential with the help of SSO. But if you want to access the virtual machines, so in this case, it's mandatory to provide the access of user ID and password. Means credential must required. Okay. In our application gateway properties, Mhm. we will find multiple options. Multiple option in the sense like as a custom domain का option हमें मिलेगा and it gives us option to configure the SSL certificate, ठीक है? And WAF we have already discussed about the WAF services. So it will take time. So meanwhile, can we discuss about one more practical, one more topic? Yeah, which one? That's related to application gateway or something? No, related to the networking. Okay. Yeah, you can go. Okay, so let me explain the concept because if your concept is if our concept is ready, so definitely we are able to perform the practical task. Actually, I'm talking about the Bastion. Okay. It's also a one service of network, which is really important for everyone. Bastion. जब हम कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तो वी हैव अ थ्री डिफरेंट वे to connect our virtual machine. One is RDP, Mhm.
SSH or Bastion. RDP 3389, SSH 22, और इसमें किसी भी लॉजिकल पोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है because it work over a HTTPS. Both required public IP address. इसमें हमें क्या चाहिए? Public IP address. In case of Bastion, single public IP address which is hide single public IP address helps to connect multiple instance. एक पब्लिक आईपी एड्रेस से मल्टीपल VMs को कनेक्ट किया जा सकता है. Is it okay? Yeah. Most of organizations, to 90% organizations prefer to use Bastion service to access the virtual machine because what Okay. happens? कोई भी organization multiple public IP address नहीं purchase करना चाहता. Mhm. ठीक है. So Bastion can help us to create a Bastion can help us to access the virtual machine. Second, uh, the prerequisite for Bastion, if we talk about the prerequisites for Bastion, इसके लिए आपके पास जो सबनेट है ना, you must need to assign a one subnet. मतलब VNet again categorize create two subnet, VM subnet अलग से create करना है हमें और Bastion subnet अलग से create करना पड़ेगा. A single Bastion can help us to connect multiple virtual machines. जितने भी instances हैं उन सभी को ये connect करने का option हमें provide करता है. All right. ठीक है. तो जैसे ही हमारा एप्लीकेशन गेटवे रेडी होता है ना, वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम बेस्टिन को कॉन्फ़िगर करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द वीनेट और वीनेट में अपने पास ऑलरेडी सबनेट्स भी हैं, तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड क्रिएट अ न्यू वीनेट, न्यू बेस्टिन सर्विस. Okay. A Bastion just to connect the VM, and Just application gateway is just like a load balancer. yes, both are different to each other. Yeah, but I'm looking that's you need two subnets, one for Bastion and one for VM. Yeah, it's mandatory to create two different subnet. Okay.
Or taking time. Yeah, minimum 10 to 15 minutes required.
Hello, can you hear me? Yeah, Manjeet, I'm here. Actually, once it's completed, it gives us a one public IP address, just like a load balancer, right? And we Mhm. just need to copy the public IP address and paste on browser. So do Okay. one thing. I'm not going to delete anything in our setup, and Mhm. we'll resume it by tomorrow because we need to discuss more about the properties option. Is it okay? All right. All right. And also we'll discuss about Bastion and another options which is required for network. Done? Fine. Yeah, done. No problem. Good. Okay. So we'll send you recording. You can connect tomorrow. Fine. Thank you so much. Welcome.